Aaron, let's start with our hacker question that is counting value. So there was a hacker that need to traverse through a valley and then reach at sea level, right? That value can consist of some uphills and some downhills. And whenever we go uphills, let's say this is sea level, whenever we go upscale, there is a positive change of 1 unit altitude, right? So if somehow its altitude is L, so there will be L plus 1 whenever he go ups, and there will be negative change of length L minus 1 whenever he goes down, right? So just keep that in mind. And you have to return number of ways to start, like if starting from sea level, like if he's starting from sea level, if somehow he reach again at sea level, that you can return number of ways through which he could reach, right? This is my first way. Second way could be uh, this, right? This is my second. Third way could be this again. Fourth way could be this again. You have to create valleys. Valleys are always down the sea level, right? This is my valleys, right? But we won't count like if somehow this if I'm standing here, if somehow I came here, right? But I went above the sea level, then again came at sea level. So I won't count this as a way, right? I will only count this since they said valleys. So valleys are always like they the question stated that below the sea level, वैलीज हमेशा below the sea level ही होंगी, तो मैं वही काउंट करनी है, ठीक है? नंबर ऑफ valleys traversed, they'll just wrote here number of valleys traversed. So you need to remember this point and this point to solve this question. So let's start with our first test case. The first test case, right? So this is our first test case, right? So let's make a sea level, right? This is just consider me as a standing here, right? I said two things, right? The first thing is that if somehow you get U, it means there is a positive change of length, means you will do L plus 1. And if somehow you get D, there is a negative change, you will do L minus 1, right? Second thing, वैलीज वही होंगी जो सी लेवल के नीचे होंगी, राइट? So this might just sea level. So this is my valid valley, but this won't be y. This is not my valid value. So just remember this. We'll only count valleys that are below the sea level. This is my sea level, right? So you won't count this valleys. You'll just count this which are below the sea level, right? So just remember this thing. So let's start with our this test case. The first character is U means now he will go 1 unit up. So let's say he went 1 unit up, right? 1 unit, let's say plus one. Then he went 1 unit down, let's say minus one. So you won't count this, right? Since this is up the uh, this is not just this is not down the valley. It just surface of the valleys, right? So you won't count this, right? Now we'll got again D. So we will one step down minus one. Then again D. Again one step down minus one. Then again up. Then you got plus one. Then you got again down minus one. Then two times up. So two times up means this is plus one. This plus one. So you will count this value. So there only one way through which he could reach sea level again, right? So answer will be one, right? So they given answer as one, right? So let's take one more test case. It could be, let's say, steps are 10. So it just D, D, up, 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 D, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, down, down, up, down, right? So we just start. This is my sea level. They said go 2 unit down. So 1 unit down, 2 unit down, right? Then they said
minus 1. Then we said to what 2 unit up. So 1 unit up, 1 unit up, plus 1. I have reached my sea level again. Like this is my sea level, this is my again sea level. So count is 1 since valleys are below the sea level, right? Then they said to go 2 unit up, 1 unit up, 2 unit up, then again 2 unit down, right? We came here. Now we won't count this valley since it is above the sea level, right? Then we go, then we went again up, then we went again down. So again we won't count this valley. So our answer is 1. We'll only count that valleys that are below the sea level, right? So you need to remember this thing, right? So what are the condition that you have to ignore, right? हम इस वैल्यू को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? Just think in which condition we could ignore these values, right? उसको कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर हमें ये दोनों वैल्यूज को इग्नोर करनी है. So think that you could notice that. Let me make it one more time. ठीक है, एक और बनाता हूँ. This is my sea level, right? What I said, go 2 unit down. This is my 1 unit, 2 unit down, then go 2 unit up here, and we reach that sea level again. Then go 2 unit up again, then down, down, then up, then down, right? So you need to ignore this, right? But we'll take this, right? So how we could ignore this both value? As you know, if somehow I start with s square to 0, when we go down, as I said, we'll take minus 1, we'll just decrease the value, so it's -1 here. Again we went down, then -1, then we went up, then +1, +1. So the whole value at point this is s equal to 0 again, right? सेम कंडीशन हियर, यहाँ भी s इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ भी s इक्वल टू 0 हो जाएगा. बट हम एज यू नो हमें ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी है, तो ये वैल्यूज कब आ सकती है? हम इधर हैं, बट जो उसका करंट पोजीशन है वो फिर से अप हो जाए, राइट? इस पॉइंट पे एंड इफ s इक्वल टू 0 एंड उस पॉइंट पे जैसे पी आई, उस पॉइंट पे हमें अगर फिर से u मिल जाए तो हम वो वैल्यूज इग्नोर कर देंगे. मतलब अ, हम वो वैल्यूज तब नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है, हम अगर ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आएगी तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको ही लेंगे. सिंस क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यूज हमेशा सीरियल के डाउन होना चाहिए, ठीक है? सो इसका कोड करते हैं, ठीक है? तो विल टेक इट स्टार्ट इक्वल टू 0, एक काउंट ले लेंगे, काउंट इक्वल टू 0, एक फॉर लूप फॉर int I is 0, sorry, I less than step and then I plus plus, ठीक है? If path I equals to u, big U, whenever we get up, तो up में क्या करते थे? up में क्या करते थे? L इक्वल टू L प्लस 1 will increase the L length value. तो हमने हमारी लेंथ इधर हमने स्टार्ट लिया है, तो क्या करेंगे? स्टार्ट प्लस प्लस, राइट? एल्स मतलब वी गॉट डाउन. जब डाउन होता था तो क्या करते थे? डाउन में क्या करते थे? एल इक्वल टू एल माइनस 1, राइट? तो इसमें क्या करेंगे? स्टार्ट माइनस माइनस, ठीक है? अब हमें वैल्यूज काउंट करनी है, तो वैल्यूज कब हो सकती है? एक तो स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड पाथ आई इक्वल टू यू, तभी हम काउंट करेंगे. काउंट प्लस प्लस और यहाँ कर देंगे रेटर काउंट, राइट? ऑल गुड. स्टेप देखते हैं क्या होता है. हमें वो पाथ, वो वैल्यूज इग्नोर करनी थी जो ऊपर जा रही है, सी लेवल के ऊपर जा रही है, तो इसे हमने ये कंडीशन लगाई है, ठीक है? इसको सबमिट कर देते हैं.
ठीक है। तो इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं कि ये वैल्यू को कैसे इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे हम है इस पॉइंट पे s इक्वल टू 0, तो हमें ये वैल्यूज काउंट करनी है। ये वैल्यूज काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ s इक्वल टू जो एक कंडीशन और लगा देंगे, पाथ i इक्वल टू यू, मतलब हम तब हम यहाँ रीच कर चुके हैं, तो हमें ये काउंट करना है। तो ये तो ये दोनों कंडीशन लगा देंगे, फिर काउंट प्लस प्लस करके हम इसको ले सकते हैं, बट इसको इग्नोर कर देंगे, राइट। ठीक है, तो एक एक टेस्ट केस और ले सकते हैं, तो हो जाएगा, है ना? एक टेस्ट केस और ले लेते हैं। ठीक है, 9 ले लेते हैं स्टेप्स, ये मेरे स्टेप्स हैं, अप डाउन डाउन, अप अप डाउन डाउन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 अप डाउन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद गोइंग अप, स्टार्ट विद गोइंग डाउन। ठीक है, गोइंग अप। ठीक है, फिर ये मेरा सी लेवल है, फिर गोइंग डाउन, फिर 2 यूनिट अप अप, फिर 2 यूनिट डाउन डाउन, फिर अप है। ठीक है, फिर डाउन है, एक और अप ले लेते हैं, एक और अप। ठीक है, इसको टच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरी स्टार्ट की वैल्यू 0 है। नाउ वी गॉट एज इसको यू डी, यू डी, यू डी, डी, यू डी, यू। ठीक है, स्टार्ट 0 है, यू मिला तो यहाँ स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई, फिर डी मिला तो यहाँ स्टार्ट की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट की वैल्यू 0 हो गई है, हमें ये वैल्यू काउंट नहीं करनी थी। तो ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया कंडीशन, इफ एस इक्वल टू सॉरी ये क्या है, डाउन, अप डाउन डाउन, एक गलती कर, एक मिनट। ठीक है, तो पहले हम गए अप, फिर वी केम डाउन, वी केम डाउन, वी केम अप अप, डाउन डाउन, अप डाउन अप। ठीक है, ये मेरा सी लेवल है, ये मेरा अप है, ये मेरा डाउन है, ये मेरा डाउन है, अप है, अप है, डाउन है, डाउन है, अप है, डाउन है, अप है। ठीक है, यहाँ मेरी स्टार्ट वैल्यू 0 है, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरा आई इक्वल टू 0 है, यहाँ मेरी स्टार्ट की वैल्यू भी 0 है, फिर हम गए अप, जब अप गए तो स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई, फिर डाउन आए तो स्टार्ट की वैल्यू हो चुकी है 0, स्टार्ट की वैल्यू हो चुकी है 0। ठीक है, जब स्टार्ट 0 हो चुका है तो हम कहाँ आ चुके हैं, ये ये हो चुका है, फिर हम आ चुके हैं इधर, ये हमारी करंट इंडेक्स है, इसी पॉइंट पे एस इक्वल टू 0 हुआ है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी वैल्यू काउंट करने के लिए, इफ एस इक्वल टू 0 एंड पाथ आई इक्वल टू यू, इधर तो डी है, तो हम ये सक्सेसफुल इस वैल्यू को इग्नोर कर पा रहे हैं। ठीक है, यह हमारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो समझ लो कैसे वैल्यूज को इग्नोर करनी है, ये वैल्यू अप थी, इसे हम इसको इग्नोर कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर आप देख सकता है कि हो जाएगा। थैंक यू।